Irrespective of how much wealth, assets, and material possessions we may acquire for comfort in our life, the real wealth lies in our health. We have often heard this saying, but in the hustle and bustle of our lives, we have somewhere forgotten it. It has been noticed of late that the majority of our wellness-related problems are due to the wrong lifestyle. Crack the Wellness Code, or CWC as it is commonly known, has its origin in the health hero story of its founder, Mr. Naren Bakshi, a serial entrepreneur of Indian origin in Silicon Valley. He was able to reverse his lifestyle diseases like diabetes, sleep apnea, and obesity by making lifestyle corrections that were backed by ancient Vedic wisdom and Western scientific research. This led to the establishment of India chapter in June 2020, with Wing Commander V.K. Kala leading the Indian operations. With full support from India Community Center and CWC Global in Silicon Valley. This received due adulation from the Honorable Chief Minister Mr. Ashok Gehlot and the then Health Minister of Rajasthan Dr. Raghu Sharma. The encouraging feedback led to the formation of the Indus Wellness Code Trust in April 2021 and finally registered as a Section 8 company under the Companies Act by the name My Crack the Wellness Code Foundation in July 2022. CWC has a dedicated full-time team, doctor patrons and volunteers with a total focus on wellness. The initiative has conducted more than 50 webinars on various dimensions of wellness such as physical, mental, emotional, and occupational wellness, and so on, with experts from around the globe, including Stanford and Harvard University. Our Wellness Resource Center was established at Mr. Naren Bakshi's ancestral property to run regular wellness activities such as wellness-based events, knowledge and yoga sessions, support group interactions, access to wellness library, and so on. It is located at a prominent commercial hub at Jaipur. Various eminent educational institutions, corporates, and other not-for-profit organizations are already associated with us to work together on spreading the wellness message. This foundation firmly believes that we must take care of our body and mind, as this is the place where we have to spend our entire life. Wellness means that to the extent possible, we should follow good habits in our life so that we remain healthy in all aspects and live our life to the fullest. Healthy mind and thoughts reside in a healthy body, and if we want to live a happy life, then we shouldn't ever let it fall sick. The goal of my CWC Foundation is to bring wellness to the lives of 50 lakh people in 5 years. And for this, our mantra is E, educate, I, inspire, E, empower, and I, impact. The Indian chapter of CWC, just like CWC Global, is committed to working on the reversal of lifestyle disorders related to heart, obesity, diabetes, cancer, and mental and behavioral health. Today, India is doing well in various sectors, but when it comes to Global Wellness Index, India ranks fairly low. It is high time that we Indians claim our rightful place in the Health and Wellness Index, and we are sure that we will make an impact there. So, let us all unite and join this cause of a better India, a wellness-oriented India. नमस्कार, आपका स्वागत है माय CWC इंडिया के इस बहुत ही रोचक सेशन में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एक विशिष्ट अतिथि। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हम आपसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराएं जिन्होंने अपने जीवन में न सिर्फ एक आयाम स्थापित किया है और काफी प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने काफी कुछ हासिल किया है, साथ ही वे अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहे हैं और उन्होंने स्वास्थ्य का जो एक फ्रंट है उसको काफी अच्छे से हैंडल किया है। तो आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं विशिष्ट हमारे सम्माननीय अतिथि, वो कोई नए नहीं हैं। वो कहना चाहिए कि इतनी कम उम्र में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अपने आप में प्रशंसनीय है और हम सबके लिए प्रेरणादायक है। पेशे से वे इंजीनियर हैं, कहना चाहिए IIT मद्रास से उन्होंने पास किया, फिर उसके बाद में उन्होंने PhD भी की और बर्कले यूनिवर्सिटी जो है वहां से उन्होंने बिजनेस की भी डिग्री हासिल की
उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी किया कैलिफोर्निया बार्कले से। और कहना चाहिए कि उनके नाम पे करीब 150 से ज्यादा पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं जो कि काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, जैसे कि सीएसआईआर का यंग साइंटिस्ट अवार्ड जो उन्हें 2016 में मिला, डीए मेमोरियल अचीवमेंट अवार्ड जो कि यूसी बर्कली से दिया गया 2009 में, और राफेल रॉड्रिज गोल्डन एज फेलोशिप अवार्ड अगेन बर्कले से, और सिल्वर मेडल फॉर द हाईएस्ट जीपीए इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास। ये कहना चाहिए बहुत ही छोटे से हैं, साथ में उन्होंने जितना काम किया है वो अपने आप में बहुत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट एट काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर चेन्नई, और वे प्रोफेसर भी रहे हैं एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के। और उन्होंने काफी कुछ इनिशिएटिव और काम किए हैं, और उसके ऊपर उन्होंने कई पेटेंट्स उनके नाम पे हैं करीब। और साथ ही अभी फिलहाल में वे कहना चाहिए कि एडजंक्ट प्रोफेसर हैं आईआईटी जोधपुर और एसआरएम यूनिवर्सिटी के। साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है कि वो फाउंडर एंड सीईओ हैं आयुर एआई, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आयुर्वेदा के साथ में कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर उन्होंने ये कंपनी बनाई है, और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर बाला से कि उनकी ये जर्नी इतने विविध आयामों के साथ में कैसी रही। डॉक्टर बाला, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। और कैसे हैं आप? बढ़िया। संडे मॉर्निंग एंड आई एम फीलिंग ग्रेट टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो आप बताएं कि हम आपके खुद से सुनना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। जैसा आपका मतलब पूरा कहना चाहिए, हम वो पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें काफी वैरायटी काम आपको बहुत इम्प्रेस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप अपने खुद बताएं कि आपका कैसी जर्नी रही और इस दौरान आपने किन किन समस्याओं से रूबरू हुए और उनको कैसे हैंडल किया। जी। Thank you. First of all, let me thank the CWC, both India and US chapters, for the opportunity. So just to share about my journey, how I got interested in Ayurveda. So 10 years back, जब PhD खत्म होने के बाद, when I came back to India, I was trying to maintain, similar lifestyle as a grad student, right? Sleeping very late, not eating breakfast, which, affects health significantly. Obviously, at a young age, इतना ध्यान भी नहीं देते हैं कि कैसे, lifestyle habits impact करते हैं. So that's one of the trigger points that I had, right? I got something called chronic gastritis. I still remember, after going to the doctor said, this is, very common because you have been leading a very stressful life. I was also doing job in central government at the time. And, for my first job, so we want to get a lot of things done. So there's a lot of challenges in terms of, managing the pressure in the work environment. So what he said is combined with your, lifestyle habits and possibly genetics, because at the time, all my brothers had similar issues with gastritis. So he said that could have triggered. And I remember he said, you can do endoscopy. So we did endoscopy and he said, this chronic gastritis is due to ulcers and I will give you a medication. It will go off and you can, eat. So at that time, I was not able to eat spicy food. Being from Andhra, I said, how can an Andhra person not eat spicy food? So he said, don't worry, within 2 weeks, you will be able to eat, biryanis, all the spicy stuff from Andhra, no worries. So he gave some medicine and he gave a lot of antibiotics. Obviously, that is the conventional cure for, my disease. So it did not work. So again, I went back, again, more medicines, more antibiotics. So like that, I've taken probably 6-7 courses of antibiotics over, a period of 5 years. It did not really help. In fact, it made, my disease worse in certain sense. So I stopped all the medications.
So one day, I met an Ayurveda doctor. So being a scientist, so you always think, what is this Ayurveda? Right? So we always think that it's an alternative system of medicine. It's some It's an alternate system. So it's been there for the last 1,000 years, 1,000 plus, 2,000 plus years. So what एक is मिनट really एक मिनट मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप खुद से तो गए नहीं होंगे आयुर्वेदाचार्य के पास में, तो Yeah. आपको किसने प्रेरित किया कि आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर को भी दिखा लें या आयुर्वेदा कंसल्ट करें? बहुत important point है. Being a scientist, right? We never take initiatives to go to Ayurveda doctor. In fact, it just so happened that one of my relatives, उनका एक treatment हो रहा था Ayurveda से. So they started feeling better. So my mother-in-law essentially forced me to go meet the Ayurveda doctor. I said, no, I don't have time. क्या है Ayurveda? I've tried all modern medicine, it didn't work. So then, very interesting experience. जब उनसे मुलाकात हुई, he didn't know anything about me. He just looked at my pulse. Right? So the Ayurveda doctors करते हैं नाड़ी परीक्षा. So he just looked at my pulse for 1 minute, and in that 1 minute, he was able to tell my entire health history. बीमारी कब स्टार्ट हुई, 5 साल के पहले आपका बीमारी स्टार्ट हुई, 3 साल के पहले एग्रीवेट हुआ है, अभी आपका ये डिसीज है. So I was, in a sense, it was very eye-opening for me. I said, how can, हमारे पास इतने modern instruments है, इतना diagnosis करते हैं, इतना टेस्ट लेते हैं, उनके बाद ही पता चलता है कि क्या बीमारी है. So now you have an Ayurveda doctor, just zero cost, looking at the pulse, and he is able to tell the entire history of, my disease, pathophysiology, what we call in modern science. So that's what triggered me to, जो हमारा साइंटिस्ट का नर्व जो होता है, एक क्यूरियस है, लाइक कैसे पता चलता है कि ये आयुर्वेदा डॉक्टर्स को कि बीमारी है. So that's what actually motivated me to look into Ayurveda in a more scientific way. हाँ, एक प्रश्न और कि आपको लगता है ये तो ठीक है कि उसने आपको मोटिवेट किया और आपके अंदर में एक कीड़ा कुलबुलाने लगा कि मैं जानूं कि ये क्या हो रहा है. तो एक चीज ये बताइए कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल थी एंड द ईटिंग हैबिट्स जो थी, बीइंग आंध्रन, आंध्रा में थोड़ा स्पाइस के प्रति ज्यादा लगाव होता है, तो पर घर के और लोगों को तो नहीं है, आपको ही है. तो आपकी सोच, आपका क्या चीज ऐसी लगी थी आपको कि जो ट्रिगर कर रही है, या उन्होंने कहा कि आयुर्वेदाचार्य ने कि ये ऐसा है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो जो आयुर्वेदा में एक टर्म है प्रकृति. सो ये हमारा तत्व होता है. सो वाता, पित्ता, कफा, ये 3 मेजर टाइप्स का प्रकृति होता है. एंड मोस्ट ऑफ अस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ these 3 phenotypes, which I will explain when we talk more. So what actually happened is, when they did my Prakriti analysis, I have a Vata, Pitta, Prakriti. So that means, as per Ayurveda, if you have Vata, Pitta, Prakriti, gastritis is a Pitta disorder. So that means you have certain predisposition towards gastritis. So all of us are predisposed to certain things, like Vata person predisposed to, let's say, neurological disorders, Kapha person predisposed to metabolic disorders. जो हमारा predisposition होता है, ये आयुर्वेदा में already बताया गया है. But when your lifestyle is dissonant, so this predisposition जो होता है, it aggravates and turns into a disease. So that is what has happened. That's what he says has happened. ओके, वेरी ट्रू. कि आप जैसे हैं वैसे तो हैं ही, पर आप अपनी सेहत को अपने खान पान से और अपनी लाइफस्टाइल के जरिए बढ़ा भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं. सो आपने जो है उसको खराब कर लिया था. सो आपने उसमें क्या चेंजेस लाए? मतलब उन्होंने कुछ औषधि दी आपको, कि दवाइयां दी, कि कुछ उन्होंने आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए डाइट में, या क्या मॉडिफिकेशंस आपने क्या फॉलो किए? जी. तो जब आयुर्वेदा डॉक्टर्स जो भी डिसीज ट्रीट करते हैं, हम बोलते हैं वो बहुत पर्सनलाइज्ड होता है.
unlike the conventional way of treatment, right? If you have gastritis, typically same medicines are given, but Ayurveda doctors जो होते हैं ये holistically treatments usually देते हैं. So it has mainly 3 components. पहले होता है diet का modification. So जो भी diets, right, aggravate your what they call pitta dosha and increase the acidity in the stomach, पहले उसको कम करना है. So the Ayurveda doctor gives a list of the diet that you can eat that you should absolutely avoid. ये पहले चीज होता है. So second is, नहीं तो आपको क्या बताया उन्होंने कि क्या मत खाइए, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपने क्या किया. वो तो एक थोड़ी जनरल टर्म हो जाती है कि ये नहीं करो या ये करो, तो आपने क्या किया स्पेसिफिकली ये जरूर बताइए जी. so first is there are 3 aspects of food. क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है. क्या खाना है, what you should eat is very relevant to your body. So जब ने आयुर्वेदा डॉक्टर बताया कि आपका एसिडिटी ज्यादा है, so you should eat cooling foods. So cooling foods जो होता है very light on the stomach. So typically these foods consist of eating light light quantities of rice, vegetables like cucumber, which has a cooling effect. Not eating spicy foods, because spicy foods, right, aggravate the wounds, whatever gastritis you have. Okay. And also kab khana hai. So I always used to eat little bit late. So that's why he said that आप time पे नहीं खाते हैं. So जब जो आपका habit होता है वो you have to regularly follow. You cannot delay the meals because your body is telling that you're hungry. Then your body will start producing acid, and if you don't have any food in your stomach, it will cause, right, irritation in the stomach. So he said that don't skip meals and eat on time. Third is what kind of foods, especially I was eating a little bit of protein, right, and hard to digest foods in the night. जो भी रोटी होता है, he said that avoid hard to digest foods in the night. Eat light foods. जो भी rice से बना होता है, idli, dosa, सेमिया. So these are all easily digestible foods, so that your stomach, when you are sleeping, it is actually resting and not spending energy and effort to digest the food, which will cause irritation. So these are the things. And he also suggested that when you wake up in the morning, right, you can drink something that cools your stomach. So I drink herbal tea, non-caffeine herbal tea, which helps me cool down, right? So I mix a little bit of tulsi, I drink some herbal tea, which helps me prepare the body for the day. ग्रेट. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई कि हमारे वो दर्शक जिनको ये प्रॉब्लम है कि आप अपने खान पान में सुधार करें, तो आप भी बाला की तरह एकदम मुस्कुराते हुए और गैस्ट्राइटिस से बिल्कुल दूर हो जाएंगे. ये तो हुई बात कि आपने क्या किया और आपने उसको फॉलो किया. तो कितना टाइम लगा आपको ठीक होने में? So Ayurveda jo usually, right, there is no quick fixes for anything, because you are trying to fundamentally cure the disease at a more fundamental. It is not just reducing the symptoms. So when he started giving treatment, within 1 month, I could see initial benefit in terms of, in terms of reduction in, usually I used to get, especially 5 or 6 evening time, right, a lot of stomach bloating, pain. So that has reduced the initial symptoms. Then slowly over the period of, right, 3 months, 6 months, when I started taking medicine, that helped me tremendously into managing if I don't eat any irritable foods. Before that, even if I don't eat irritable foods, my stomach used to irritate. So after 6 months, right, that started decreasing. Then over a period of, 1-2 years, right, as I took more Ayurveda medicine, I met other Ayurveda doctors. So now I feel better, much better, in the sense that I don't get any irritations if I don't eat spicy food. If I manage as per the diet recommendations, as per the minimal supplemental recommendations they give, I'm perfectly fine. ग्रेट. तो इसने आपको प्रेरित किया कि आप जाने कि आयुर्वेदा में क्या खासियत है. वैसे तो ये हमारा बहुत पुराना, कहना चाहिए, शास्त्र है और काफी सालों का इसका अपना एक इतिहास रहा है.
और एक दो मतलब कहना चाहिए जैसे मॉडर्न मेडिसिन है, ये कुछ सैकड़ों सालों का नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। तो आपने क्या सोचा, बीइंग इंजीनियर एंड साइंटिफिक, आपका जैसा अपब्रिंगिंग रहा है, कि किस तरह से हम जाने कि आयुर्वेद को क्या हम एविडेंस बेस्ड कर सकते हैं, या आपने जो आपकी नॉलेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो उसके इसमें कुछ इम्प्लाई किया, क्या रहा आपका आगे का? Yeah. So being a scientist, right, we when we started the company, right, we said we have to bring in evidence. So there are two kinds of evidence. जो evidence होता है दो तरह की होते हैं. First evidence होता है clinical evidence. So जो treatment, right, when patients take, right, they can tell whether the treatment has benefited or not. So that is the clinical evidence. And if you look at Ayurveda, क्योंकि Ayurveda emerged, right, 2000 plus years back, बहुत सारा clinical evidence है कि Ayurveda help करता है patients, right? But what we don't have is modern rigorous evidence, in the sense that we understand, right, through collection of, blood markers, right? जो example देता हूँ diabetes है. So when you go to a doctor, they'll first measure your sugar level and they'll give you a treatment. And the way you know whether you got better or not is by tracking rigorous markers. That is number one. And second evidence, rigorous evidence we need to generate is if a particular medicine is given, a medicine actually fundamentally kaisa kaam karta hai, right? So that is the second evidence, understanding the basis of how a particular medicine works. So Ayurveda always had good clinical evidence for the last 1000 plus years. Otherwise the system would not have survived. That's why we call Ayurveda. It's not, it's not philosophy, right? It's science of life. Veda is, right, science, Ayur is life. So Ayurveda always had a scientific basis because it has emerged 2000 years back. Probably the terminology that is used to explain the science is very different than what we understand in the modern aspect, which had come about in the last 100 plus years. How this Ayurveda science has to be understood. So the first thing we said is we need to create evidence. So we always have saying in our company, in God we trust, everybody else must bring data. So that means you need to provide evidence to show that जो भी interventions है, Ayurveda interventions है, that has a tangible, measurable benefit. So I'll quickly show one slide, right, in terms of, what we had done, right? So when I started the company, I registered myself as the first subject in the clinical study that we have done at SRM University. So let me quickly share, one slide into what actually we observed. So as I had mentioned, right, I took multiple antibiotics, proton pump antacids, did not fully cure the disease. And it also has side effects. In fact, it is known that if you take a lot of antibiotics, जो gut का bacteria होता है, so we call it gut microbiome. Interesting fact is, जो भी हमारे cells है body में, ये microbial cells है, it is 10 to 100 times more in our body. So essentially we are half human, half is the bacteria that's in your gut. So what I did is, since I took a lot of antibiotics, I thought, let me measure what is my gut health. So you can see that there's a company which we partner with, Bug Speaks. So they do full metagenome. That means all the genes of your microbiome, ये sequence करते हैं modern methods से. And you can see that because I took so much antibiotics, I got a highly negative score. In जब हम प्रोफेसर से बोलते हैं नेगेटिव स्कोर जो होता है फेल होता है. So I have failed the gut microbiome test in a modern sense, that in terms of the distribution of the gut bacteria, in terms of their potential health benefits, to vitamin productions, a lot of vitamins that are produced in your body, right, has a basis of the bacteria. They help in vitamin productions. Same thing with short chain fatty acids. So these are all beneficial bacteria that will help you maintain the health. Since I took a lot of antibiotics, first thing we observed is the gut health has irrevocably changed. So when I look back, I should not have taken so much antibiotics, because once your gut microbiome changes, it is very hard to come back to normal. You have to do a lot of interventions, because this microbiome
is evolved in your body over the last 30 years. And once you destroy it, the diversity changes, reduces, and a lot of good bacteria gets killed because of antibiotics. So, एक suggestion है, if you don't have to take antibiotics, please don't take. Because once you do it, right, your health changes irreversibly. So second thing we did is, we did a clinical study. We said, we are going to measure all the markers. So I measured my symptoms, various blood markers. जो भी gastritis patients होते हैं, उनका mild anemia होता है, उनका vitamin deficiency होता है. We did all the blood tests and we found out that these are all the challenges. So we said that after 3 months of just Ayurveda treatment, no modern medicine, how does the symptoms and blood markers change? Then we said, what is common in all chronic diseases? What is common in all chronic diseases is inflammation. Irrespective of the disease, आपका body inflame हो जाता है because the disease is there for lot of years. So we measured inflammatory markers. जो IL-6 at COVID के time भी measure करते थे ये markers. So we have seen universally that, especially my markers, post 3 months of Ayurveda treatment, it has reduced by 20 to 30% depending on the marker. So this is the evidence to show, right? Not just for me, we have also done for 60 other patients, irrespective of the disease, inflammation in general decreased because of Ayurveda treatment. So this is the evidence that we got that yes, Ayurveda works. You can see the change in the symptoms, but you also can see the change in the blood markers, inflammatory markers. Okay. So, this is the study that we have done. We are very, fascinated with the results of the study. This is the first of its kind study that showed that in diabetes patients, in gastric patients, as you increase the treatment duration, that's why Ayurveda में बताया जाता है कि don't just look for quick fixes, because it is not just symptom alleviation. Ayurveda tries to cure your disease fundamentally. So you have to continue your treatment at least for a couple of months as per the doctor's instructions. Then you can get cured fundamentally. So this is a proof that two months treatment versus 3 months treatment, right? You can see almost 50% decrease in the inflammatory markers. So that's why Ayurveda doctors say don't stop the treatment in the middle just because you're not finding immediate relief. Especially for chronic lifestyle disorders, you have to take a certain time for you to actually see the benefit. थैंक यू बालाजी, बहुत अच्छे से बताया. मुझे कुछ याद आ रहा है कि आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. एक तो दिनचर्या को, कि कैसे आप दिन बिताएं. एक होता है ऋतुचर्या. ऋतु के अनुसार भी अपना खान पान और रहना अगर हम करते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं. और जैसे कि आपने भी अनुभव किया कि आपका जो प्रकृति थी उसमें विकृति आ गई थी जो दोष उत्पन्न हो गए थे. दोष कहा जाता है पर वास्तव में वो खराबी नहीं है. दीज आर एक्चुअली द बेसिक क्वालिटीज जिसको हम बोलते हैं गुण. तो वात पित्त कफ जो है वो एक्चुअली आपकी, अगर कहा जाए तो पूरी पर्सनालिटी, आपकी पूरी सब कुछ बता देता है. अगर वो ज्यादा है तो नुकसान है. जैसे बोलते हैं अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो वो तो नुकसान करेगा ही. पर हाँ, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि आप जो भी काम करते हैं उसको बिल्कुल पूजा के समान, और इस तरह से जैसे कि पानी दूध में मिल जाए उस तरह से बिल्कुल पूरे से रम के करते हैं. तो ये बहुत ही आपकी, कहना चाहिए, एक उल्लेखनीय आपकी गुण है जो कि सब हम लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए. माइक्रोबायोम की जब बात आई तो कुछ चीजें और भी आती हैं. वैसे तो कहना चाहिए कि मॉडर्न मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट करती हूँ और उसी में हमारा, कहना चाहिए, शिक्षा हुई है. पर इतना जरूर जानते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो यूजुअली सिम्टम्स को सप्रेस करने में रहती है. अगर बुखार हुआ है तो बुखार की दवा जो कि बुखार को कम कर दे. अगर आपको कुछ और भी हो रहा है तो उसको कम. पर हाँ, कुछ चीजों में बहुत अच्छी है, जैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जो वैक्सीन्स और ये डेवलप हुए हैं. एनीवेज,
तो हम बात कर रहे थे आयुर्वेद से कंसर्न, तो आपने बात की कि माइक्रोबायोम्स जो है हमारे, हम उससे टेस्ट कर सकते हैं और अपनी बीमारी को समझ सकते हैं। तो क्या आपने कुछ जीनोम्स और उसके ऊपर भी वर्क किया, जैसे अभी आपने बात की थी, तो उसको हमारे दर्शकों को समझ में आए ऐसे थोड़ी सी सरल भाषा में बताइएगा। So I'll take, I'll just show a quick slide, right? First to understand what Ayurveda is and what is the genetic basis for Ayurveda, so that people understand where Ayurveda is coming from. बिल्कुल बिल्कुल। So usually I do a comparison, right, between Ayurveda and the modern how theories are evolved, right? So Ayurveda का जो basis है वो बोलते हैं त्रिदोषा theory, वाता पित्ता कफा. Okay. So last 2 years हम कोशिश कर रहे हैं कैसे अंडरस्टैंड करें मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, so that we can tell, this is what vata pitta kapha is. So I'll give a parallel, theories, right? So we have heard of gravitational theory. जब न्यूटन, all of us would have studied in class 12, न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है, एक कहानी है कि जब एप्पल गिरते हुए देखा है, then he thought about gravitation, right? How much of the true is is immaterial, but he has invented a theory which says that there is a उसमें gravitational. एक बात जो निकलती है कि देखिए, बहुतों ने देखा होगा ऊपर से एप्पल को गिरते हुए, पर जिसने ये सोचा क्यों होता है, ऐसे ही आप हैं कि जिन्होंने ये सोचा कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो जी, So that is the important part. So उसके बाद आइंस्टीन आए, because in that न्यूटन जो एक्सप्लेन किया है, इसने एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी है. So Newton has not explained gravity कैसे emerge होता है. So Einstein came and said gravity, right, is nothing but energy. So if you have a lot of energy, that's what creates gravity, right? So the energy can be concentrated in the mass. So that mass, right, can be converted to energy. So then people started asking how mass is energy. So then came string theory, right? Mass is nothing but vibration of particles. So I'm giving a parallel because this is how theories evolve. And when modern explanation comes, right, we didn't understand why gravity emerged. It took 200 plus years. Even now it is not fully understood. Okay, subject like quantum gravity. In quantum level gravity kaise emerge hota hai, still people don't have full answers. So that is why it is very important to understand how theories emerge. So Einstein once famously said, all theories are approximate, some are useful. So one of the theories that we find very useful is Ayurveda, Tridosha theory. So last 20, 30 years, there have been pioneering work, groups from CSIR, various institutions. They have done pioneering work to understand actually a Tridosha theory kaise emerge hota hai. इसका कोई scientific basis है या नहीं. So what people have done is they have asked Ayurveda doctors to classify people into Vata, Pitta, Kapha, and then they looked at various markers. Pehle easiest to understand is blood markers. Dr. Mitali and Dr. Bhavna from CSR have done very pioneering study to show that in healthy individuals, ये blood markers जो होते हैं, आपका cholesterol levels है, आपका micronutrients level है, आपका immune markers है, they all significantly differ in healthy individuals. If you classify as per Vata, Pitta, Kapha. Then there is another group which has looked at genomic markers. जो आयुर्वेदा में बताया गया है कि आपका प्रकृति, if you understand, if you actually look at the science, right, your prakriti is determined by various factors. In fact, Ayurveda text में बताया गया है चरक संहिता में. It is determined by your genetic makeup. It is also determined by, right, your local environment when your mother was pregnant. So we call it epigenetic factors in modern terminology, right? So both combined with genetic, epigenetic, and also it is described in Ayurveda that depending on the food that the mother eats, right, it affects the health of a person. So that means Prakriti is also determined, right, by not just what you are born, not just the genes, because genes are already determined from your father and mother, but how those genes, right, get manipulated. Because all of us are born with, genes from father and mother, but some of us, right, have more propensity towards, certain diseases. They have done twin study karte hain.
जो differential genetic makeup होता है, expression, so they will find that even though they have both genes, but the expression is very different. So that's what we call epigenetic factors on top of the genes. Third is microbiome. जो metagenomics है, ये आपका microbiome होता है. So people have done pioneering studies to show that in these prakriti, different prakriti types, all these markers differ significantly. So that is the scientific basis. I will not go into a lot of details. There are, a lot of studies I can give references. Yeah. But to understand, right, how actually your vata, pitta, kapha emerge, it is very important to understand how these emergent properties come. Yeah, that's true. It reminds me of one thing कि हमारे यहाँ बोलते हैं, बहुत पुराना कहना चाहिए, हमारा जो लिटरेचर है वो सब कुछ, और जो हमारे पुराने ऋषि मुनि और उन्होंने भी सबने इस बात को किया है कि वाइब्रेशंस, when it is dense, it makes solid. When it is little bit less, it's like then it is a liquid form, and then when it is very sparse, then it is a gaseous form. And so because all the organisms, they are also nothing but vibrations, and the vibrations in different density makes them. So अभी जो आपने ये बताया, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही कहना चाहिए थॉट प्रोवोकिंग है, एक तरह से मन को उद्वेलित कर देता है कि क्या बात है, इस तरह से तो और भी जानना चाहिए और सोचना चाहिए. और सही बात है कि जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा ही आपका शरीर बनता है, आपके जीन्स बनते हैं, क्योंकि और कहीं से कुछ भी नहीं आता. इट्स लाइक यार जैसे फैक्ट्री में आपके हैं रॉ मटेरियल, कुछ वैसा ही है. और ये पचाने में हमारे जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो गट माइक्रोबायोम्स हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं. अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो नेचुरली आपका डाइजेशन और एवरीथिंग विल बी डिस्टर्ब, जैसे कि आपने भी अनुभव किया. तो इसमें हमें और आगे बताइए कि आपने कैसे जाना कि हम इनको देख करके कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है. So, Prakriti in modern science is nothing but phenotypic features. So, a slide you can see that this is what is observable, or you can ask questions to the patients and you can get it. For example, आपका body build कैसा है, ये anatomical features है, psychological features है, आपका memory कैसा है, आपका physical features है, कैसे walk करते हैं. So, obviously, 2000 years back, right, we didn't have sensors, we didn't have blood reports. So Ayurveda doctors used to look at lot of phenotypic features. And जब ये phenotypic features का aggregation होता है, then you can determine what is the prakriti of a person. So in the right side, I have put actually how this phenotype, I call Ayurveda phenotypic science. This phenotype emerges from your genes, your cells, your proteins. All these interactions is what causes. Just a minute. फिनोटाइप्स हम अपने दर्शकों को बता दें, जो आप दिखते हैं, जैसे आप दिखते हैं, मतलब फोटोजेनिक, जो कुछ आप दिख रहे हैं, दैट इज अ फिनोटाइप. जो आपका जेनेटिक है वो जीनोटाइप हो जाता है. तो आपका अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर बाला बात कर रहे हैं, वो है कि आपके अपीयरेंस, आप किस तरह से आप दिख रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या आप क्या बात कर रहे हैं, वो सब कुछ निर्भर करता है और बनाता है आपकी प्रकृति को. एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली जी. सॉरी टू इंटरप्ट. श्योर. जो फिनोटाइप है वो एक्चुअली it is an emergent property out of your genes, out of your epigenetics, out of your gut microbiome. All these are combined, and the last one is the phenotype. So that is what Ayurveda ascribes, right? And then it understands if you have this phenotype, if you have kapha phenotype, you are more prone to metabolic disorders. So it has a predisposition also inbuilt. So another question I get asked is, how can Ayurveda doctor just look at one part of your body and he or she can tell your whole health? Of course, they also do other tests, right? We call it Dashveda Pariksha. But pulse is one of the main tests a lot of Ayurveda doctors do. So when I looked at it, I said, being from aerospace engineering background who has done fluid mechanics, I said, it is just blood. Blood is fluid. So how can blood and your vessels, right, carry so much information about the entire body? So then we started looking at, understanding how
one part. So we call it, so in modern terms, we call it each finger is a sensor. It senses your blood pulse, right? So if you look at cardiovascular system, this is the beauty of Ayurveda, right? Cardiovascular system is, in modern sense, we call it closed loop system. So जो भी blood heart से pump होता है, reverse आ जाता है heart पे. So that means every part of the body knows what is happening in every other part of the body. So that is the scientific basis for, Nadi Pariksha, because it's a closed loop system. एक्चुअली हम कहना चाहिए, हम जब भी पल्स देखते हैं नॉर्मली, तो हम 3 फिंगर रखते हैं अपने लेटरल साइड, ये जो है यहाँ पे अपनी फिंगर्स को ऐसे रखते हैं और हम फील करते हैं. नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कितना हमारी उसके ऊपर हमको पल्सेशंस फील हो रहा है, सो दैट एंड व्हाट इज द रेट लाइक, कि कैसे आ रही है. पर आयुर्वेदा में तीनों हम नॉर्मली जो रखते हैं, हम तीनों को एक मान के रखते हैं. Like the 3 fingers act as a one sensor, but in the Ayurveda, the 3 fingers act as the 3 sensors, and the 3 have got the, उनमें तीनों में अलग अलग जो हमको फील हो रहा है, किस तरह से किस फिंगर में ज्यादा महसूस हो रहा है, किस में कम हो रहा है, किस तरह की फीलिंग आ रही है, जंपिंग आ रही है, फ्लैट आ रही है, वाइब्रेटिंग आ रही है, और कैसी उसकी गति कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, तो इस सब के ऊपर बहुत अच्छा होता है. तो डिड यू ट्राई दिस मेथड, मींस दिस प्रॉपर्टी ऑफ द आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन इनटू AI? Yeah, so we have made an application where instead of measuring जो ये pulse होता है, arterial pulse होता है. So what we measure for is something called capillary pulse, because the same pulse that has traveled and come to your finger, and it turns out that जो capillary pulse है वो more robust होता है. So what we have done is, we've asked an Ayurveda doctor, you please tell what is the dosha imbalance in this person. Ayurveda doctor gives the label, and we trained our AI algorithm, which I'll explain more in the next lecture. You can put the finger in front of your camera pulse, and we do a lot of image processing and AI, and we extract what is the imbalance in your body. So we call this digital pulse diagnosis, so that even remotely you can collect this pulse information. True. Sorry. ये बहुत ही अच्छा है, और मेरे ख्याल में एक नई तरीका आप बताने वाले हैं, और ये हमारे को बहुत ज्यादा कहना चाहिए इंतजार रहेगा हमारे अगले सेशन का भी सबको, कि कैसे आपने AI को इनकॉर्पोरेट किया है आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन में, और सब कुछ और भी हमें जानकारी दें कि आपने और क्या क्या इसमें इंक्लूड किया है और कैसे करने वाले हैं. जस्ट ग्लिम्स. वैसे तो हम अगला सेशन आपके साथ में विस्तार में लेने वाले हैं, पर फिर भी ये ट्रेलर हो जाना चाहिए. Sure. So there are. So I'll give a brief about what we are doing in our Ayurveda company, and if I get some time, I'll also explain. जो हमारा सेंटर है IIT जोधपुर में, it's called Ayurtech Center of Excellence. What are the research that we are planning, and what is the solutions that we are planning? So this is the name of our company. It's called AI. The goal is to have evidence-based Ayurveda for integrative health and medicine applications. So before I talk about what we have done, right, it's very important to understand what Ayurveda is capable of. So we all think, right, जब हम questions पूछते हैं, आप healthy है? So people usually, right, say they are healthy if they don't have any symptoms. So there is absence of disease is equal to health, but nothing can be farther from truth. Last month, there was a big study that is done by Dr. Mohan's Research Foundation, which shows that there are close to 300 million people in this country who have some disorder or the other, whether it is diabetes, hypertension, obesity. So even without explicit symptoms, there is disease that has started. In Ayurveda, we call it Kriya Kal. It starts from cells, tissues, then it propagates to organs, and then we see symptoms at a later stage. So the paradigm that we have right now
right, is we are increasing, we are living longer, but जो स्वास्थ्य है, healthiness है, that has been coming down. So the status quo of understanding and treating diseases is not working. So that's why there is a huge potential for prevention. जब बोलते हैं, if you can prevent diseases, you will save a lot more than when you treat diseases. बहुत सारे calculations हुआ है इनके बारे में. If you can ensure that a person, right, lives an extra year healthy, this is just in US they have done calculations, you can save $1 trillion. Imagine what you can do, with that money that you save, which can be used for a lot of other purposes. So just to give a glimpse of what we are doing, जो हमारे company है Ayurveda में, we combine Ayurveda principles and get information from digital markers, blood markers, and use machine learning, deep learning techniques, which I will expand in the next talk, to give personalized recommendations. So our first solution is iWell. It's called Integrative Health and Wellness Application. It combines Ayurveda diagnosis and modern diagnosis, whether it is from blood markers or gut biome markers, and it gives a holistic recommendation. जो आपका diet क्या लेना है, you can do doctor consultation. You can ask the doctor what supplements they should take. There are few yoga and meditation suggestions that we have given in the app. So currently, right, we are trying to build an integrative platform where you can understand disease, prevent the disease if it's an early stage, with a combination of holistic lifestyle. So if any of you are interested, you can go to Google Play. We're just doing pilot launch. Only few dedicated people we are sharing this so that you can give us good feedback. So this is an application that we have developed which helps you understand your health, Prakriti, Vikriti, and you can consult with an Ayurveda doctor. ये तो हुई बात AI की. अब एक चीज जो है ये पूछना है कि इसमें आप कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, like how can we say कि okay, how authentic is the result and the आपके इसमें कितने percentages जी. Yeah, so this is extremely important question, right? क्योंकि Ayurveda में जो standards actually established नहीं हुआ in terms of the diagnosis. So then what do you compare against, right? So what we do in our companies, there are 3 aspects. How to get the diagnosis standardized. So first thing we say is, we ask an expert Ayurveda doctor, without the use of our application, you please assess the way you assess a patient. And then you tell us what you feel, what is their prakriti, what is their dosha imbalance. So we write down all these labels. Then we also have an internal Ayurveda doctor who looks at the data and then also gives a label without knowing what is the label that the first doctor has given. So essentially you have 2 labels for the same prakriti, let's say, where one Ayurveda doctor is assessing independently and we are collecting questionnaire, they give a label. Another Ayurveda doctor will verify, and if they don't, both of them don't agree, then we need to bring in a third Ayurveda doctor, or we need to let them talk to each other and then resolve, right? So this is the only way we are able to standardize right now, because there is no golden standards. Like just say हमें blood pressure है, so there is a gold standard instrument which will tell exactly, right, 120 millimeter by 80 millimeter. ऐसा standards Ayurveda में नहीं है. So that's why we take an approach of something called, crowdsourcing, where multiple Ayurveda doctors can give a label, and we train all our AI algorithms against the labels given by the Ayurveda doctors. And then we assess, जो training होता है, training के बाद कितना accurate है हमारा algorithm. Prakriti determination में कितना accurate है. In fact, a lot of studies have been published. At least for extreme Prakriti types, you can get accuracy of 97-98% to determine. Mixed Prakriti types, accuracy थोड़ा कम है क्योंकि different Ayurveda doctors look at it differently. It's around 80%. So as we get more data, these algorithms will only get better. So when you asked about, what is the AI that we use? So we have a slightly different definition of AI. Typically, people call AI as artificial intelligence. We call it augmented intelligence. How we can
augment the decision making process of an Ayurveda doctor, so that they, instead of collecting data for half an hour, 1 hour, we have the data, and the Ayurveda doctor looks at the data, we give suggestions, and they can spend more time talking to the patient. हाँ, पर इसमें I have got one हाँ, एक इसमें मुझे शंका है, वो ये कि कहीं जो कहना चाहिए आयुर्वेदा का इसेंस है, क्लिनिकल जजमेंट एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हम कहीं उसमें इंटरफेयर ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस एआई के ऊपर आपकी खुद की इंटेलिजेंस को ऑगमेंट तो नहीं करता है, वो जरूर सप्रेस कर देता है। एनीवेज, ये तो हुई बात कि आपने क्या किया और अगले हमारे इस सेशन में क्या लेके आने वाले हैं। एक छोटा सा ट्रेलर था, पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने एप्लीकेशन तो बनाई, आपने इलाज भी लिया और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पर क्या आप वो जो आपको कहना चाहिए मॉडिफिकेशंस एडवाइस किए गए थे, क्या अभी भी आप उनको लेते करते हैं, फॉलो करते हैं? Absolutely. ये हमारा दिनचर्या जो होता है, I take at least 3 Ayurveda supplements to keep myself healthy every day, and I see a significant benefit, क्योंकि if you don't follow as per the guidance, then after some time you will start seeing adverse results. हाँ, वो वहीं पे आ जाएंगे आप जहां से आपने शुरू किया था, क्योंकि आपने अपना जो रिकवरी है उसको खुद ही बंद कर दिया, आपने जो करेक्शंस थे उनको वहीं छोड़ दिया, तो जो डैमेज है, आप जो डैमेज पहले भी करते थे वो वापस से बढ़ जाएंगे और एज एज एडवांसेस वो डैमेजेस बढ़ते जाएंगे। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप प्रैक्टिकल टिप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे। जैसे कि आपने बोला कि आपकी वात पित्त प्रकृति थी, जहां तक मुझे समझ में आता है कि वात लोग जो होते हैं उनको थोड़ा दे आर फास्ट, दे आर वेरी, द मूवमेंट्स आर वेरी फास्ट, दे आर थिन बिल्ट, और उनका ड्राई स्किन, ड्राइनेस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, ब्रीदिंग फास्ट रहती है। और पित्त प्रकृति के जो होते हैं, देयर स्किन इज बिट ऑयली, और शार्प होते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है, जल्दी बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, एंगर भी ज्यादा आता है। एंड देयर पाचक जो कहना चाहिए शक्ति है, आपका जो डाइजेशन है जो वो स्ट्रॉन्ग होता है। So they produce more acid in their stomach, and which causes, and not only that, they are high tempered. उनको गुस्सा भी ज्यादा आता है, उनका चेहरा लाल रहता है, आंखें लाल रहती हैं, बहुत जल्दी गुस्से में भी आ जाते हैं, और ये सारी चीजें उनके पूरे के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो आप में इन दोनों प्रकृतियों के गुण हुए? Definitely. My wife can attest for that. So, आप ये बताएं कि आपने इनको रेगुलेट करने के लिए अभी आप क्या क्या कर रहे हैं, और हमारे दर्शक इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स है तो उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। एज कहना चाहिए आप तो खुद भुक्तभोगी हैं, तो आपने क्या किया जी? Yeah, so I'll tell what I have done, as I mentioned, but I'm not an Ayurveda doctor, so I don't want to give suggestions. So first suggestion is you please everybody should consult an Ayurveda doctor, because जो भी Ayurveda recommendations होते हैं वो बहुत personalized होते हैं. Having said that, there are some general recommendations that everybody can do. Okay, so if you give me I'll just take 3 tips. I give 3 tips, and then I will mention what they can do for each prakriti slightly differently. But these tips will, lot of it actually will cover what is the general thing irrespective of your prakriti that you can potentially do, which can help you. So I'll just share the screen. And a lot of these tips we have mentioned in our application. People can download. There is a code that they have to enter. It's called AIM23. Then you can get access. So a lot of tips are there mentioned. So tip number 1, I think all of us know about this. जो हमारा customs में है, right? So they say at least once in 2 weeks fasting करनी चाहिए.
So as a scientist, we started understanding fasting क्या होता है, what is the effect of fasting on our health. जब लिटरेचर जब आई थी मॉडर्न साइंस की वजह से, the results were tremendous. Now it has become a fad in US. It's called intermittent fasting. It's called, long fasting. There are some 4 fads which, we have been following for the last, 2000 years. So benefits. So when you don't eat, simple thing is your body needs sugar. So sugar कहाँ से आता है? Whatever stored in the body है, वो burn हो जाता है. So that causes reduction in the diabetes, because जो हमारा modern food है, it is highly, diabetes causing, because polished rice, polished wheat, absorption is so fast that your sugar spikes will be very high. So if you don't eat, the sugar spikes will be low, and your body uses the reserves, जो भी glycogen reserves है, fat reserves है, वो सब burn हो जाता है. So you have instant benefit in terms of the diabetes. Second is something called cellular autophagy. इसके एक Nobel Prize भी मिला है. How actually, your body cleans itself. So autophagy is, right, in Ayurveda terminology, we call it mala. So byproducts of, right, your metabolic process. So in cellular autophagy, cells which are not, we call it senescent cells in modern terminology, they get recycled and, some of them will actually die. So that's very good for the health. And if you do fasting for longer time, of course, it should be in supervision of a doctor. Your gut microbiome जो होता है, वो reset हो जाता है. You have to do it for longer time, but your gut microbiome can actually reset. So when this gut microbiome resets, then you have to eat. Of course, you have to bring it also properly. So after fasting for 2 days, it's not like you go and eat gulab jamun and laddu. Then it will start producing bad bacteria. You have to take the right food under the supervision of a doctor so that your gut microbiome becomes better. In fact, this resetting of the gut microbiome is shown extremely beneficial to a lot of diseases, including Alzheimer's, including diabetes, of course, including PCOS. Everything is related. Some gut dysbiosis factor is there. Last but not the least, जो longevity genes होते हैं, SIR2, we call the SIR2 genes in modern sense, they get excited because your body is trying to conserve energy. So the cell division gets retarded, right? And whatever cellular process there, they get reset. So there are a lot of longevity genes that get excited if you do fasting for longer time. So this is one of the tips that all of us should follow, right? At least once in 2 weeks. This has been there in our, ancient traditions, customs, but modern times we are not following it. But these are all the benefits. Second is breakfast. We think that since we are fasting, we are breaking the fast, we have to eat a lot. In fact, Ayurveda actually tells, something completely different. Your breakfast should be minimal. Your lunch can be a lot, because that's when you produce a lot of digestive fire to digest the food. And your dinner should be optimal, because you have to give rest while you are sleeping to your stomach. But modern sense, we eat breakfast like a king. Lot of idlis, dosas. And lunch also like a, we eat a lot. And dinner also we eat a lot. In fact, there were a lot of studies that were shown that a large breakfast in the morning increases pro-inflammatory markers, increases, right, your insulin resistance, and it can also cause metabolic syndrome. Last tip, meditation. So this is one of the things that, I try to at least practice once a week. Because Rashmi ji, you asked, Vata and Pitta personality, they're thinking very fast. The mind is always running 100 miles per hour. How do you actually balance that? So meditation is one of the ways you can balance that property. Irrespective of the meditation, in fact, it has been shown, right, whether it's Sudarshan Kriya, transcendental meditation, inner engineering, there are so many meditation techniques. Irrespective of the technique, it has large benefit, especially for Vata Pitta people, because you have increased coherence in the brain. जो हमारा modern science में बताया जाता है कि we only hardly use 10 to 20% of our brain power at a time.
But yogis, right, who have done meditation for a long time, they have the tremendous potential, right, to use the full brain power. So when we say coherence, different parts of the brain work together at all times. Second is, there is, since we have emerged, right, from, essentially a lot of our limbic brain, right, has flight or fight response. We call it sympathetic activation. Because of stress, also this causes sympathetic activation and increases blood pressure, etc. So another advantage of meditation is it decreases the sympathetic activation. So you are more calm and quiet, and you can make decisions more efficiently. And there are so many studies that are done, right, including inner engineering, Sudarshan Kriya, transcendental meditation, that जब meditations करते हैं, there is increased immunity. So they look at gene expression, किस genes ज़्यादा express हो रहे हैं. So they found out that your immunity genes express without, and your inflammatory genes decrease. So that means body में जो inflammation होता है वो कम हो जाता है. Last but not the least, there are a lot of beneficial hormones that are released, right? Prolactin, it's called, happiness hormone. So these all, increase when you do meditation. So this is one of the health tips, right, that all of us can follow. Just, 10 minutes of meditation will do tremendous health benefits without, with essentially zero cost. True. जैसे मतलब प्रकृति के ऊपर रहता है कि आप जितना ज्यादा अपने दिमाग में खलबली मचा के रखते हो, जैसी बात प्रकृति होती है कि दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं, एक के ऊपर से दूसरे, दूसरे से तीसरा, चौथा, और इस तरह से ये जो वाइब्रेशंस हैं ये एक तरह से chaos बना देते हैं आपके. और when you are meditating, not only your breathing becomes quiet, your thoughts also become less, and as with the less of the thoughts, the vibrations become very much synchronized, and they become symphonic, and so you feel so much peaceful and so much of happiness inside. एंड वेरी राइटली सेड कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आयुर्वेद में जो बात कही है कि दिन में उस समय खाइए जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होता है. उस समय में आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो सबसे अच्छी होती है. और यदि आप बहुत हेवी ब्रेकफास्ट लेते हैं ये सोच के कि आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हैं तो खूब खाने की आपको अनुमति है, तो जानिए कि आप बहुत सारे अपने अंदर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को जन्म दे रहे हैं. और फिर आप कहते हो कि साहब मैं बीमार हो गया, मेरे अंदर ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स क्यों बढ़ गए? तो भाई आप ही ने तो खाया है, क्यों दबा के खाया था उस समय? तो ये सब कुछ है. हाँ, ये जब भी आप व्रत उपवास करते हैं तो एक बात बहुत ध्यान में देने की है, विशेष तौर पे जब लंबा उपवास किया जाता है कि जब आप खाना वापस से शुरू करें तो फर्स्ट लिक्विड डाइट लें, डिपेंडिंग अपॉन द डेज ऑफ फास्टिंग. सपोज आपने 2 दिन फास्ट किया है या एक ही टाइम अगर आप आधा दिन फास्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे आप थोड़ा फलाहार से शुरू करें और हल्का खाना लें. मॉर्निंग में, इवनिंग में आप नॉर्मल जैसे लेते हैं ले सकते हैं. यदि 2 दिन का फास्ट है तो प्रेफरेबली स्टार्टिंग फूड शुड बी अ लिक्विड डाइट, नेक्स्ट डाइट शुड बी अ खिचड़ी, और जो बाद में उसका लेंगे उस दिन भी आप खिचड़ी ही खाएं, और तीसरे दिन जो है आप हल्का फुल्का और हल्की सब्जियों से शुरू करें. पर यदि आपका लंबा फास्ट है, 7 दिन का है, 10 दिन का है, तो आपको कम से कम 3 दिन तक पोस्ट फास्ट लिक्विड डाइट लेना चाहिए. उसके बाद में सॉफ्ट डाइट 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद में आप अपना रेगुलर डाइट पे आए. फिर भी अवॉइड करें ज्यादा तला भुना खाने के लिए. जैसे सच बात कहा है कि ये हमारे अंदर में जो अच्छे माइक्रोबायोम्स हैं उनको पैदा करने में मदद करते हैं, पर यदि आप फिर से गलत खाएंगे तो वो नष्ट होने लग जाएंगे. अब हमारे पास में टाइम काफी है. हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक यदि कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि से तो उनका स्वागत है. तो आप या तो चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं या फिर
think Dr. Rashmi's got disconnected. Thanks, Dr. Manish. I think there was a comment from Dr. Manish. Any questions from the audience are welcome. You can ask us to unmute you and we'll do that. You can raise your hand in case you wish to put a question. Maybe we can mute everybody and see if anybody has a question. It was a very good presentation, doctor. And वही बात है कि when Ayurveda is coming with AI, there are so many things to ask. There are so many questions, but अभी क्या क्या पूछ लूं, क्या क्या छोड़ दूं, मुश्किल काम है डिसाइड करना. क्योंकि क्या है कि हमारी जिस तरह की दिनचर्या है, the kind of lifestyle we are leading, there are so many diseases, there are so many hazards. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है on and off, जो जैसे एसिडिटी आपने अपनी बताई. I have so many people in family जिनको वात से related issues हैं, डकारें खूब आती है, गैसेस हैं, फिर पित्त का है. तो वो मैं ये समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या पूछूं. तो मुझे लगता है कि थोड़ा और होना चाहिए और इस तरीके के सेशंस होने चाहिए, मे बी बेस्ड ऑन हर पर्टिकुलर तरीके की डिजीज पर स्पेसिफिकली. ऐसा मेरा सोचना है. Yeah, definitely. It has to be very personalized, as you know, as I had mentioned, right? There is no one pill that fits all. That is the beauty of Ayurveda. Exactly. True. And then there is diabetes again, then obesity. There are so many things. तो किसी एक पर कंसंट्रेट करके समझ में नहीं आ रहा कि किस पर ज्यादा ध्यान दें. बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि ये सेशन should have been divided into parts. Like we'll be talking about regarding this in this time. फिर इसका ये वाला तब डिस्कस करेंगे, इसका अगला वाला तब डिस्कस करेंगे. At length जो प्रॉफिट या जो सबसे बेस्ट निकल सकता है वो ऐसे ही निकल सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ. Thank you. So मेगा जी का कुछ क्वेश्चन है, mentioning that long fasting prevent diabetes spikes, but as we study, diabetic patients are not allowed to fast. Excellent question. That's why I always say, please do anything with a supervision of a doctor. It actually depends on the diabetes. In fact, the modern science, right, shows that even in type 2 diabetes, there are 4 different clusters, subtypes of diabetes. So depending on what kind of diabetes that you have, and depending on what stage of diabetes, if you have pre-diabetes, yes, you're probably okay, right, doing fasting just once. But if you're advanced stage of diabetes, if you do fasting, right, you may get hypoglycemia. So all this has to be customized for each one under the supervision of a doctor. इसलिए शायद वो सबको एक रडार पे लेते हुए कह देते होंगे कि डायबिटीज जिनको है वो फास्टिंग ना करें. बिकॉज ऑन अ कॉमन लेवल या एक कॉमनर की तरह से अगर मैं देखूं तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि मुझे किस तरीके का डायबिटीज है, क्या लेवल है और मुझे फास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. शायद इसीलिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन उन्होंने दे दिया कि इफ यू आर डायबिटिक स्टॉप फास्टिंग. Yeah. Dr. Rashmi, you want to say something on this? Dr. Rashmi, can you hear us? एक्चुअली में हम लोग जो कुछ भी कहते हैं कि आप मत करिए, वो इसलिए होता है कि नहीं चाहते, ये पता नहीं चलता कि आप किस तरह से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और घर में यदि किसी तरह की कुछ परेशानी हो गई तो मुश्किल हो जाएगा. वैसे फास्ट करने में डिपेंड करता है आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको कुछ अनटूवर्ड इफेक्ट्स दिखते हैं, जैसे आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप कुछ खा लें. आप कुछ लिक्विड ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है. आप बोलेंगे क्या हम आम खा सकते हैं? हाँ, एक आध टुकड़ा खा सकते हैं, ज्यादा मत खाइएगा. और इसी तरह से अगर हम सेंसिबली होकर के अगर हम फास्ट करते हैं तो डायबिटिक्स कैन डू फास्ट एंड इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. यस. Just to add, Dr. Rashmi,
So nowadays, right, we have a lot of technology at hand. In fact, you can have a continuous glucose monitor. I don't know how much of you can see, right? But you can see that I track my blood sugar levels, right, very regularly. So you can take the advantage of technology. Right now it is showing 143. I had decently heavy puri. Bala, can you just check the angle of the screen to just help everyone see properly? Yeah. Just change the angle so that everyone could have a look. या कई वैसे होते हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, कई गैजेट्स भी हैं जिनसे हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग कर सकते हैं. ये अवेलेबिलिटी के ऊपर है. यदि आपके पास में उपलब्ध है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, पर यदि नहीं है तो आपको अपने बॉडी के जो सेंसर्स हैं वो क्या कह रहे हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक होगा. Oh, can I say something? Please. So, Balaji, first of all, thank you very much, and Rashmi ji, thank you very much. तो आप अभी फास्टिंग की बात कर रहे थे, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट रहा है. माय वाइफ who is quite a bit diabetic, we had gone to True North. एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उन्होंने 10 दिन उपवास किए, water only fast. Being a diabetic, there was no problem. Everything went fine. Now, it is true that they always check your markers every day, just to be very sure that nothing wrong is happening. So it looks like fasting is possible for diabetic also, but you must check your parameters. तो हमारा तो ये अनुभव है उसके बारे में, but I'm so glad you're doing great job. Thanks, Naren. Thanks for the opportunity also to speak to so many people. Yes. और कोई कुछ अपनी शंका समाधान चाहते हो? आपका स्वागत है. I have a question, Dr. Bala. What will you suggest for the obese person? I mean, जिस तरीके की लाइफस्टाइल हम लोग लीड कर रहे हैं, it is a very busy and a sedentary lifestyle. Honestly, you keep on sitting on a chair for 8-9 hours. Yeah. और कभी-कभी आप काम में इतने engrossed होते हैं कि वो सुना तो सब है कि 5 मिनट 10 मिनट बाद you should get up and take a walk, half an hour बाद आप थोड़ा सा, but once you are into the work, you don't have the time और आप भूल ही जाते हो कि आपका आधा घंटा हो गया, आपका वॉक लेना है, या समटाइम्स याद भी होता है तो आप सोचते हो ये कर लो पहले, मेरा लिंक टूट जाएगा, मेरा कंसंट्रेशन लॉस्ट हो जाएगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड. तो आप ऐसे में क्या सजेस्ट करते हैं? व्हाट काइंड ऑफ फूड यू विल सजेस्ट? व्हाट काइंड ऑफ लाइट एक्सरसाइज जो आप शायद बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या ओवरऑल व्हाट विल यू सजेस्ट? So I'll give some general tips. I'm not a doctor, but this is what I have experienced. See, in general, first it's very important to understand what is the cause of obesity. Right? It could be because of dietary factors. It could be because of hormonal imbalances. Right? It could be because of our lifestyle, right? Very sedentary lifestyle. I think that is very important to understand. Once we understand, right, then corrections can be done. If it is dietary, let's say we eat a lot of donuts, we eat a lot of laddus, gulab jamuns, then it's very important to understand, as Dr. Rashmi also told, that every time we eat, eating is actually an inflammatory process. It is shown, right? They have collected inflammatory markers, especially after eating sugar. So the body causes inflammation. So you should eat first less carbohydrates, processed foods, and eat little. The reason for that is if you eat a lot, then your blood sugar level will increase, which needs a lot of insulin production. So जो beta cells होते हैं pancreas में, they get into overdrive. Then the beta cells, जो भी engine होता है, हमारा car 100 kilometers पे चल सकता है, then we want to run it for 200 kilometers per hour, it cannot run for a long time. So you have to understand that fact that body has certain way to compensate, but above that, right, it cannot. And second thing that happens is if the blood sugar level is very high, what is produced in the body is not insulin. It's something called proinsulin. It's a precursor to insulin, but since sugar level is very high, right, proinsulin gets produced instead of insulin. So proinsulin by nature is not as effective as insulin. Okay.
So you have to understand that you should not stress your body fundamentally with a lot of sugary foods, high fat, processed food, trans fat, etc. Second is, you have mentioned that, very sedentary lifestyle. One thing I observed is that if I'm sitting in some place for 2 hours, 3 hours, right, you feel very, agitated. So a little bit of walking gets your, blood circulation going. And especially, we say that after you eat food, right, that sugar that is produced in the blood has to go somewhere. So if you are especially doing something called anti-gravity exercises, walking stairs, that sugar will get instantly absorbed by your muscle cells. So in a lot of diabetes people, right, doctors suggest do anti-gravity exercises. Not, to the extent of exertion, but to reduce, right, your sugar load on the body. And meditation is, very important thing that is shown to reduce obesity, blood pressure, etc. Just 10-15 minutes of meditation per day will also help. Plus एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि what is also true is कि slowly and slowly we can develop certain habits that become part of your life. So for example, just now हमने आपका lecture सुना, उस period में I walked for 4,000 steps. आपका lecture भी सुन रहे हैं और walking भी हो गई, right? So people have to learn. Like I never take a phone call without starting to walk. तो आदत पड़ गई हो, right? ये अच्छा लगता है. तो ऐसे ही हर एक को अपना अपना लाइफस्टाइल चूज करना पड़ता है, whatever is practical for you. तो sedentary lifestyle तो हटानी ही पड़ेगी. Yeah, another important tip, what we have seen recently is that when you eat food, don't eat high carb meal like rice, roti at the beginning. That's why, हमारे tradition में first we tell that you eat poriyal, right? You eat some salad, because that will do two things. That will reduce the sugar spike because fiber is hard to digest, right? That's number one. And number two, fiber also occupies the surface area in your large intestine, so that your sugar absorption is more delayed. So these are simple tips that anybody can follow. Once you know the reasoning, right, it becomes very easy to follow. So I take something called, whenever I have to eat very lot of idlis, dosas, so I use something called, methi, fenuflakes that are there in our platform. You just mix it with buttermilk. And if you take that, right, initially what I found is that you get the feeling of fullness, so you'll not eat a lot. And since you're eating fiber, right, your blood sugar level will not spike so much. थैंक यू सो मच. और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, आप लोगों ने सुना. तो एक जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं. तो आज हमने सुना डॉक्टर बालाजी को, उनकी जर्नी, एक बहुत ही टेक्नोक्रेट, कैसे उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल, अपने गलत खान पान के कारण क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस इनाम में पाई, और फिर उससे उन्होंने निजात पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े, और अंत में जाके आयुर्वेद में उन्हें सहारा मिला और वे उससे फायदेमंद उनको लगा, और अब भी काफी उससे लाभ महसूस कर रहे हैं. तो जो हमने जाना और समझा वो ये कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें. कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है. अपने खाने को मुख्य रूप से एक बड़ा खाना या जो लार्ज मील जो कहते हैं वो आपका लंच होना चाहिए, क्योंकि उस समय में सन इज एट द हाईएस्ट पीक और उस समय आपका डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा होता है. सन के रहते ही खाएं तो बहुत अच्छा है. अगर आप रात में, देर रात में खाते हैं तो नेचुरली आपकी डाइजेस्टिव पावर कम हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करें. शाम को हल्का खाएं. ऐसे ही सुबह का नाश्ता भी आप बहुत जल्दी ना करें और नहीं बहुत ज्यादा करें, क्योंकि और ध्यान रखें कि खाने में मीठा, व्हाइट शुगर कम से कम हो. व्हाइट शुगर जैसे आपके कहना चाहिए टंग को बहुत पसंद आता है, आपके स्वाद को बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे ब्लड वेसल्स को भी लगता है, एंड वो उसको जाके बहुत जल्दी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज इन्फ्लेमेशन. जब भी कहीं पे पकता है ना, तो क्या होता है, वहां पे जगह लाल हो जाती है, दर्द होता है. तो वो कुछ ऐसा ही है, तो उसको अवॉइड करें. कोशिश करें कि आप
चलते फिरते रहे, घूमे अपने, अगर कुछ नहीं बैठे बैठे ही काम ज्यादा है तो हाथ पैर चलाते रहे, पैरों को चलाए, पैरों को खड़ा कर ले, उनको थोड़ा सा लंबाई में करें। अगर आप तो वो आप कंप्यूटर पे भी या बैठ कर, रिटर्न वर्क है आपका ज्यादा है, डेस्क वर्क है तो भी आप कर सकते हैं। एक और चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के न लें। आपकी सेहत आपके हाथ में है, उसके साथ में खिलवाड़ न करें। अगला जो हमारा सेशन है वो हम ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस विद आयुर्वेदा कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर रहेगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के और सेशन हम लेके आए तो हमें जरूर से बताएं। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा और हमेशा रहता रहा है। इसके साथ ही अब हमारा आज का सेशन एक यहीं पे समाप्त होता है। वैसे तो इच्छा तो नहीं हो रही है विदा लेने की, पर समय आ गया है, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विंग कमांडर विद्याकांत काला साहब को कि वे आए और कहना औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें और बताएं हमारे दर्शकों को हमारे आगामी जो भी परिचर्चाएं होने वाली हैं उनके बारे में। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, Dr. Rashmi, for taking the session so well. और थैंक यू डॉक्टर बाला, आपने इतने बढ़िया से अपने लाइफ के प्रसंग के बारे में बताया, और वही नहीं बताया, उससे आगे ये भी बताया कि आप उसके आगे क्या कर रहे हैं आप समाज के बेनिफिट के लिए। So is my screen visible? Yes, very much. So we learned today, हमने डॉक्टर बाला की हेल्थ स्टोरी सुनी कि उन्होंने कैसे आयुर्वेद की मदद से ये टुक केयर ऑफ हिज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यू। 6 साल तक सफर करने के बाद हमने सीखा कि नाड़ी परीक्षा के साथ में कैसे एक एक्सपर्ट आपका डिजीज का पता कर सकता है। उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। हमने जाना अपनी प्रकृति के 3 चीजों के बारे में, वात पित्त कफ, जो हम लोग आयुर्वेद में काफी सुनते आ रहे हैं। And we also heard about Vikrati, which is nothing but imbalances between Vata, Pitta and Kapha, and that can lead to various diseases. We also learned that Vikrati can happen due to food and lifestyle changes in a lifestyle, faulty lifestyle that we follow. We learned about importance of what to eat, when to eat, and when not to eat, जो डॉक्टर रश्मि ने भी बताया अभी हम सबको। हमने ये भी जाना कि जो प्रकृति जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, उसको मॉडर्न साइंस फेनोटाइप फीचर्स बोलती है। We learned heard terms like genetics and epigenetics। ये हमने, अगर आपको ध्यान हो तो डॉक्टर ए श्री कुमार ने भी इसके ऊपर काफी विस्तार से हमारे साथ चर्चा की थी इसके ऊपर। डॉक्टर बाला ने इतने बढ़िया तरीके से बताया कि भाई नाड़ी परीक्षा में एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे 3 फिंगर जो 3 सेंसर्स काम करते हैं, उनसे they take all the inputs from our body। We learned 3 important tips that he talked about, which are good for everybody। He talked about उपवास, जो कि हिंदुस्तान में जितने भी धर्म ओरिजिनेट हुए हैं करीब सबके अंदर उपवास को बहुत महत्ता दी गई है। सही खाना और मेडिटेशन। So I'm sure modern perspective on Ayurveda and the information shared by Dr. Bala will be handy for most of us and will benefit us. So while in this session, major focus was on personal health journey, our next session will focus on how it was applied to AI, which he calls as augmented intelligence. So application of artificial intelligence or augmented intelligence in Ayurveda, Sunday 6th अगस्त 2023 को 10 बजे। फिर हम मिलेंगे डॉक्टर बाला पसाला के साथ। आप सबका इंतजार रहेगा, प्लीज ज्वाइन अस। और आप लोगों के अगर कुछ सवाल आते हैं तो प्लीज ब्रिंग दोज क्वेश्चंस अलोंग सो दैट दे कैन बी आंसर्ड। At our organization, we have volunteering opportunities. So we are now located at 3A, 3rd floor, 9 Leela Mansion, Rajbhavan Marg, Civil Lines, Jaipur. We provide opportunities for internship as also volunteer work. So if you are interested in wellness, you want to work with team members in India and US, Crack the Wellness Code जो है ये इंडिया में भी है और अमेरिका में भी है, सिलिकॉन वैली के अंदर। तो आपको उन दोनों देश के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। You want to contribute to societal welfare and you also want to share your wellness story. We welcome, many wellness stories जिससे कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें।
So please, you can call us on 9511540335, or you can write to us at info@mycwcindia.org. हम धन्यवाद देते हैं हमारे पार्टनर्स का, स्ट्रेटेजिक नॉलेज पार्टनर्स, IHMR, IIS. Then we have got many community partners who help us propagate our message. We have area development partners, corporate wellness partners, NGO partners, and CK Birla Hospitals were there as our wellness partners. We have pro bono partners जो हमारे को मदद करते हैं in legal issues or accounting issues or accounting related issues. इन सब का हम धन्यवाद देते हैं. टीम ऑफ डॉक्टर्स, हमारे एडवाइजर्स डॉक्टर भंडारी जी, डॉक्टर शीला नाम्बियार जी, डॉक्टर रश्मि जैन को आपने सुना अभी, डॉक्टर सुनील जैन और डॉक्टर छवि मेहरा, सबका धन्यवाद. We have our two team of advisors, Multani ji, Gurudas ji, Jitendra Gautam ji, Arushi ji. We are thankful to them. Our ambassadors, Mahir Pratap Sharma ji, Neeta Buchra ji और मेजर जनरल CP सिंह साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. मैनेजमेंट टीम, बख्शी साहब का आपने सुना, मैं विंग कमांडर काला, शरद कामरा जी जो आए थे बीच में सेशन में, उमरदीन जी, इन सब साथियों का हम धन्यवाद देते हैं. एक मंत्र जो हम याद बार बार बोलेंगे, so far we used to hear we are what we eat. जो अभी मंत्र हमको याद करना है कि सिर्फ इतना जरूरी नहीं है कि हम क्या खाते हैं, बट उसको हम कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, क्या एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करने के बाद, और फिर हम डिटॉक्स करके क्या बाहर निकालते हैं. Our next program, application of AI in Ayurveda, again Sunday 6th of August 10 AM, expert Dr. Bala Pasela. आप सबका इंतजार रहेगा. You can follow us on YouTube, The Wellness Code, youtube.com/CSC/The Wellness Code. You can follow us on Facebook. You can follow us on Instagram, follow us on LinkedIn. आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा हमारे को. एक बार फिर माइक्रेक द वेलनेस कोड फाउंडेशन की तरफ से मैं कमांडर काला आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं. एंड हैव ए नाइस डे. Thank you. And thank you, Dr. Bala, and thank you, Dr. Rashmi. Thank you Thanks. so much.